On behalf of Strategic Vision Institute, I welcome you all to SCI talk on role of nuclear technology, national security, and socio-economic development of Pakistan, being held in commemoration of Youm. Before we proceed further, I would like to mention that this talk will be conducted in the form of panel discussion, during which each speaker will be given 15 minutes. If anyone from the online audience would like to ask a question, they are requested to kindly use the Q&A option to type out the question. Please do include your name as well as your organizational affiliation along with your question. The questions then will be presented to our panel by moderator during the question and answer session accordingly. Please further note that all the opinion voiced at the SCI platform are independent opinion of the speakers and audiences and not the official policy of the SCI. This is an open house activity which will be reported in media. This session is being live streamed on our Facebook page and our on our website as well. The full recording of the talk will be available on the official website and YouTube channel of the SCI. Ladies and gentlemen, Pakistan has been making vital use of nuclear technology for the socio-economic development of the country and plans to further utilize it in order to attain sustainable development goals. This implies that there is another side of the nuclear coin of Pakistan's nuclear program, that is the peaceful use of nuclear technology. Nuclear technology is being utilized in various areas such as health, hydrology, agriculture, industry, electricity generation, basic sciences, and environment. Pakistan also stands ready to increase its cooperation with other countries and help develop the capacity and peaceful utilization of nuclear technology. I am very delighted that today we have a very distinguished panel for today's discussion. Now let me introduce to our speakers. Our first speaker for today's talk would be Dr. Naeem Salek. Dr. Naeem Salek is currently Executive Director of Strategic Vision Institute, Islamabad. He has taught at Qajar University, National Defense University, and Air University, Islamabad. He has been visiting scholar at School of Advanced International Studies at Johns Hopkins University and guest scholar at the Brookings Institution, Washington, D.C., besides being visiting scholar at Stanford University and St. Andrews. He has previously served as Director of Arms Control and Disarmament Affairs at Strategic Plans Division. He holds PhD from University of Western Australia. He has published 4 books, including 2 edited volumes, several monographs, and contributed 7 chapters. His published works also includes over 40 research articles. Our second guest speaker for today's talk would be Dr. Ansar Parvez. Dr. Ansar Parvez is currently serving as advisor to National Command Authority on matters related to nuclear power. Previously, he had been serving as chairman, Pakistan Atomic Energy Commission. Dr. Ansar Parvez, during his chairmanship of PEC, also represented Pakistan on the IAEA Board of Governors. He has served as chairman of Board of Governors of Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences as well. Dr. Parvez obtained his PhD in nuclear engineering from Rensselaer Polytechnic Institute, USA in 1977. For 18 years, he has worked for Karachi Nuclear Power Plant in different capacities. He then moved to head the Chashma Nuclear Power Project in his initial phase. For 2 years, Dr. Parvez also served as member of PAEC, looking after research and development and training programs, as well as nuclear medicine and agriculture sector. Dr. Parvez has more than 30 publications in his credit. Thank you. Now I would like to invite our first speaker, Dr. Naeem Salek, to address the following question. What role does nuclear technology play in Pakistan's national security strategy? And in what ways has nuclear technology contributed to Pakistan's socio-economic development? Thank you, Sherbano, and I welcome you all to this meeting today on a very important day. In every nation's history, there are certain days which become landmarks. And one of those landmarks which we can always look back on with a matter of great pride and achievement, sense of achievement, that is Youm Takbir. However, let me clarify right at the outset that I will be focusing my comments on the first question and will rather avoid speaking on the second question, because then that will be overlapping with the subject on which Dr. Ansar Parvez is going to speak, and obviously I cannot match his expertise on the subject, and I would not like to encroach upon his turf. The second point related to this is that Pakistan's nuclear program, which started in sometime in the mid-1950s, was essentially
a peaceful nuclear program, and the peaceful aspects of nuclear program are far more extensive and, as I said, older than the nuclear weapons program which started in the 1970s. But obviously, because of the bigger bang of the nuclear weapons, they tend to dominate the discourse, and we forget conveniently about the contribution which has been made over the years by the peaceful side of the nuclear program. As far as nuclear technology and Pakistan national security is concerned, we know that right from the outset, after the independence in 1947, we had very serious security issues, and we were faced with a hostile neighbor which was many times bigger than us in size, in resources, and in terms of military capability. However, we continue to manage our defenses against that overwhelming odds until 1971. Once India, exploiting the internal political turmoil in the eastern wing of the country, militarily intervened and helped the separation of the eastern wing of the country. After that traumatic experience, the Pakistani leadership sat down and thought seriously about Pakistan's future security and survival, and they found out that the gap between the conventional military capabilities, which was already substantial, had further widened. And Pakistan does not have the resources to close that gap and match up with India's growing conventional capabilities and confidence, as well as the fact that India also at the same time had a very active nuclear weapons program. And as we all know, this is a well-established principle that nuclear weapons can only be deterred by nuclear weapons, not by any other weapon at all. So therefore, Pakistan was left with no choice. One, to close this capability gap in conventional capabilities. And secondly, also to avoid a threat of India's growing nuclear weapons capability and the threat of nuclear blackmail by India. Therefore, Pakistan in early 1972, the decision was made in a conference convened by the President at that time, Mr. Zulfikar Ali Bhutto. He had a meeting with the scientists from Atomic Energy Commission, from various other institutions in the country, and it was decided to work towards the development of a nuclear weapons option. Now you have to differentiate between the option and the capability. So the initial goal was to develop a nuclear weapons option by developing the technological wherewithal, where in case of need, we could convert that into an actual weapons capability. This had just started off, and it was at the very early stage of the journey when in 1974, India conducted the first test of its nuclear device, which it preferred to call at that time a peaceful nuclear explosion. And the gullible world was more than willing to accept India's version. Therefore, there was not much condemnation of India except by one or two countries, including Canada and Pakistan, but rest of the world had a very muted response to that test, and they accepted as a fait accompli. This created a dilemma for Pakistan, and Pakistan understood very clearly, and it was also obvious from the letter which Mr. Zulfikar Ali Bhutto wrote to Indira Gandhi, who was the Indian Prime Minister at that time, that we do not differentiate between nuclear technology which is used for peaceful purposes or PNEs or the weapon tests.
because technologically there is not much difference, and same technology can be used for weapon purposes. So we are not willing to accept your declarations and commitments that it is only for peaceful purposes, because he also referred to India's track record that you also made commitments to resolve the Kashmir issue as per the wishes and desires of the Kashmiri people, but through a fair and free plebiscite, which we have not been able to make good on. So therefore, we cannot have trust in your commitments, and we have to be accountable. So Pakistan's initial response to India's 1974 test was to propose a nuclear weapons-free zone in South Asia. That resolution was presented in the United Nations General Assembly towards the end of 1974. It was approved by an overwhelming majority of the member states, but India refused to accept it. And Pakistan continued to repeat that from 1974 to 1998, 1997. Every year that was renewed in UN General Assembly, Pakistan's demand for declaring South Asia as a nuclear weapon-free zone. But obviously, India had other designs, because it thought that through nuclear capability, it will find a seat at the big tables on the world stage. And that had been the argument which was propounded by many Indian strategic thinkers like K. Subramaniam and others who had been writing from early 1960s that the currency of power in the contemporary world is the nuclear weapons capability. And unless we have that, we cannot assert our right as a major global country in the world. However, for Pakistan, it was not a question of prestige or to establish its credentials as an important country, or to claim a seat at the high table in the Security Council. For Pakistan, it was a matter of national survival, and also, so it was security driven, and Pakistan did not have the prestige factor, did not work into this. And many countries thought that a country like Pakistan, which had a very limited industrial base and resources base, would not be able to achieve this capability. And that is, I think, above all, the most important aspect of our achievement in this field. Because despite the skepticism as well as the obstacles, because after India's 1974 test, then you have seen the movie in which the barriers are falling down one after the other, and the hero is just sliding under them before they are closed. And it was just like that for Pakistan, because one after the other, the barrier was dropping and the doors were closing, and Pakistan was just crawling under it to find its way. And it was a very hard effort, full of obstacles and all kinds of political, economic, diplomatic pressures to prevent Pakistan from going that way. It's very famous dialogue between Henry Kissinger and the Canadian Foreign Minister at that time, immediately after the Indian test, wherein Kissinger said that India has already displayed its capability, the horse is out of the barn, so we cannot fight the fait accompli. But Pakistan is still inside, and we can still close the barn door and prevent that other horse from coming out. So all the international effort was then focused on preventing. They accepted India for whatever it had done, and they were more than willing to accept India's nuclear capability. But then all the focus and international effort came on Pakistan
to prevent Pakistan from following suit. So in that hostile environment with difficulties, Pakistan continued on its way, and ultimately we were able to achieve our objectives. And that is where it's a matter of great pride for a country which has a lot of limitations. We have structural problems, we have problems with our weakness of our institutions. We have not been able to establish governance structures. Our industrial capability is limited. But despite all that, we have been able to achieve success in cutting-edge technology, one of the most advanced technologies in the world. How we could do that? It has several reasons. First of all is the national resolve. As a nation, once we decided that we are going to achieve this capability, and then we followed it up with determination and with perseverance, we were able to achieve our goals. Second is the highly dedicated and selfless lot of scientists, engineers, technicians who worked over days and nights for years, not for days, weeks or months, but for years on end to achieve these objectives. And we simply end up giving credit to one or two or three or a few people who we know. But actually, there are a lot of unsung heroes in this program. There are thousands of them who people even don't know, but who dedicated their lives toward this cause and helped us achieve our objectives. The third aspect is that the national consensus. That is very important because on most issues, we fail to achieve our objectives or goals or whatever we claim that we are going to do, or our policies, because of differences of opinion, because of divisions among ourselves. But this was one issue which had a unique distinction, that on this, across the board, across the political divide, across the civil military divide, all stratas of society, from top to bottom, vertically, horizontally, all around, the whole society was behind this effort, and there was a unique consensus on this issue. And that is how we were able to achieve our objectives. So this is a very important lesson we can learn from our nuclear journey, that if the nation decides that we have to achieve a certain goal with a single track, resolute mind, and then put all the effort, setting aside our differences and a unified effort behind it, no goal is unachievable in this world. But that is the most important lesson which comes out of it. And we have to remember these days, and we inaugurate these not to show off our nuclear weapons power or to beat our chest that we have access to nuclear weapons which we can just throw around. That is not the case. Pakistan is a very responsible nuclear weapon state, and one of the main cornerstones of our policy has been restraint and responsibility as far as the nuclear weapons capability is concerned. And but why we celebrate this day every year is, as I said, not to drum up our nuclear weapons capability, but to acknowledge the heroic efforts of the people, thousands of them, who dedicated their lives toward the achievement of this capability which we have achieved at the end. And as we all know, we had achieved the technological capability, but we refrained from conducting any full-blown nuclear tests, although we had carried out dozens of cold tests before that to verify our designs
so that we were confident enough that our devices are going to work whenever they are operationalized. But on the May of 1998, India forced our hand by conducting 3 tests on 11th of May and another 2 tests on 13th of May. And that not only provided Pakistan with the opportunity to demonstrate its own capability, but also to restore the strategic balance which had been disturbed by India's tests. In contrast to 1974, when India had declared its test as a peaceful nuclear explosion, in 1998, India had no pretensions of peacefulness and very openly they declared themselves a nuclear weapon state. And obviously then Pakistan had no choice but to demonstrate its capability, because after India's tests, very important senior ministers in India's leadership and in the government, they had started threatening Pakistan with dire consequences after the changed strategic environment which had been created as a result of India's nuclear tests. So it was then, obviously, it was very essential for Pakistan to respond to that and display its nuclear capability to bring the things back to normal. And as it was experienced, once Pakistan conducted its tests on 28th of May and then 30th of May, the Indian rhetoric immediately calmed down and the threats stopped. So that is the effect which this capability had created. There were very few skeptics, a very small number of people in Pakistan who doubted. I have come across people who used to ask that whatever we are doing, will it work? Normally people say, ye chalega bhi ke nahi. So this was the kind of skepticism amongst a small minority of people in Pakistan. But there were a very sizable number of people in India who doubted Pakistan's capability. And they thought that this has been built up as a hoax with the connivance of the West to constrain India's nuclear development options, to keep a pressure on us that if we carry out nuclear tests or go further with the development of our nuclear capability, Pakistan will respond. And because of that, our hand is stayed. But once they dared Pakistan, they challenged Pakistan, Pakistan was able to prove that its capability was not a bluff, it was a real capability. Now, I will not go into other details, but one aspect which I want to bring to your notice is the economic dividend of the achievement of this capability. And that is in the form of the cushion which it has provided us. Because if this capability was not there, as they say, the great equalizing power of the atom, that equalizes so many things. And as Pakistan's nuclear capability is concerned, our declared policy is that we want to not only deter nuclear threat from India, but we also want to deter aggression at any level. And that includes the conventional aggression by India with our nuclear capability. And because of that, we are now not compelled to match any development in India's conventional capabilities. The nuclear capability gives us that ultimate insurance policy and assurance of our survivability against any threat which India can pose. And because of that, if you go back and look at the figures, the economic surveys which are issued every year, if you go back to 1998, look at the 1998 budget and before that, and look at the budget today, the expenditure we were making on defense in the late 1990s was around 5.6% of the GDP.
Now it is around 3.6%, probably less than that. I don't know the figures for last year or this year, but the last I saw it was around 2.6%. And that too in the backdrop of this long drawn out war against terrorism, which has been going on for almost 2 decades, which obviously entails extra expenditure than your normal training and other activities. So this has been the advantage, the economic dividend which has been provided to us by this capability. And also we feel confident that our defense and security cannot be compromised. Nobody can challenge it. Nobody can cause any harm to us. So this is where we are. With this achievement, it is now 25 years. So this is actually silver jubilee year of our achievement of this goal in 1998. So 25 years is a fairly mature age. So we have matured as a nuclear weapons state. We have matured as a nuclear nation, and that maturity should be reflected in our behavior. We should learn to behave as a self-confident, self-assured nuclear weapon state. And the doubts which some people continue to express should be now set aside, and we should focus on our development, other aspects, and also particularly those areas where nuclear technology can play a very vital role, as we are going to learn from the next presentation, which we are lucky to have the presence of Dr. Ansar Pervez, and we can't find a better expert than him on this issue. And I end my remarks here and hand over the stage to Dr. Ansar Pervez. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. One of the things which was not given in my introduction, कि मैं teacher भी रहा हूँ. I taught at PAS for a number of years, and I also taught at Purdue University, USA for 2 years. तो उस teaching का एक फायदा ये है मुझे कि मैं कहता हूँ कि whenever I'm taking I'm into a situation like this where I'm talking to youngster, and I showed you कि आप में से जो youngsters हैं, except maybe for a couple of senior persons here, मेरे जो सबसे छोटा बच्चा है आप उससे भी छोटा है. So what I'm trying to say here कि I want to have a teacher-student relationship here, and I want to explain and tell you things that I know. ठीक है, उसके लिए हम 2 बातें करेंगे. एक तो ये कि I would want that side, ताकि जब मैं स्लाइड चला रहा हूँ तो आप मेरी बात भी सुन सकें और स्लाइड भी देख सकें. और आपकी कैमरे का इशू है, वी आर फोकसिंग ऑन यू ऑन ट्रांसमिटिंग, तो अगर पॉसिबल है और बाकी नहीं बाहर आपको सर है हमारी काफी चले. इसमें फिर ये ना कि आई डोंट नो वेदर आपको वो किधर है वो पॉइंटर इशू नहीं है. पॉइंट ये है कि whether they will look at the slides or they will look at me looking at me talking. But I would prefer that you look at the slides. I think we look at the slides and आवाज तो आपके कानों में आई जाएगी. दूसरी बात जो मैं टीचर स्टूडेंट होने के लिए से प्लीज either turn off your mobiles or put them in your pocket or turn them upside down. अगर आप थोड़ी सी भी मुझे मतलब कंपेंसेशन देना चाहते हैं for spending my time here, तो जो कंपेंसेशन आप दे सकते हैं वो ये कि just listen to me. अगर बीच में आपके जहन में कोई सवाल आता है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, कोई चीज जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो प्लीज स्टॉप मी और मुझसे आप सवाल पूछें. आई हैव 40 स्लाइड्स इन ऑल, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मैं 40 उसका दिनों का पूरा कोर्स करूं. ठीक है, अगर मैं 20 स्लाइडों पे खत्म कर देता हूं, 15 पे खत्म कर देता हूं, लेकिन कम से कम जो मैसेज उन स्लाइड्स में वो आप तक चला गया, तो आई विल वॉक आउट ऑफ दिस एज ए हैप्पी मैन. जैसे कि 40 स्लाइडों में मैं दिखा दूं और ना आपकी बात पल्ले कुछ पड़े ना में. ठीक है, प्लीज जरा स्लाइड्स ऑन करें. आप सब मेरी तस्वीर जरूरी है बीच में.
स्लाइड पूरा कर देना ताकि नजर तो आए ना, हाँ फुल स्क्रीन पे लें और ये हटा दें अपनी शक्ल देख देख के मैं हटा रहा हूँ। इतने कर लें, छोटा कर लें और मक्खी बना देना छोटा, या हटाए दें अगर आप नहीं। अच्छा चलें, द टॉपिक दैट वाज गिवन टू मी वाज जॉब रेड, प्लीज उधर देखिए स्लाइड्स के। अच्छा इधर भी दैट्स नाइस, तो चलें इधर की बात। तो रोल ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हाँ ये तो इवन बेटर, थैंक यू वेरी मच। मैं इसको खुद ही फ्लिप कर सकता हूँ, बहुत ही अच्छा है, अगर मुझे दे दें तो बहुत ही अच्छा है। फिर मैं इधर आ जाता हूँ ना, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। रिमोट है, यस पावर है सर, ठीक है, मैं डायनेमिक की भी जरूरत नहीं, मैं ये देखूँ। ठीक है, रोल ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ भारत। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट दिस थिंग, ये है ना अप डाउन, आप अप डाउन करेंगे, ये तो नहीं कर, ये तो नहीं कर रहा आपको देखते हैं। अच्छा आप नेक्स्ट स्लाइड चलो देखिए, सिंस यू आर टॉकिंग ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो प्लीज जो बात मैं, दिस स्लाइड शोज कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेसिकली रिलेट्स टू थ्री डिफरेंट, one is nuclear radiations which come out of the nucleus, and the other, and we'll go through these things as we go along. और दूसरी न्यूक्लियर फिशन है जिसका अभी आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने जिक्र किया ने कि कैसे उस फिनोमेना को इस्तेमाल करके बम बनाया गया, एंड ऑल्सो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वो न्यूक्लियर फिशन की वजह से बनते हैं, आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट। और एक और फिनोमेना है जिसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हिस्सा कहते हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन दुनिया में कहीं होती है? एक्सपेरिमेंटल स्टेज, हाँ कहीं, मतलब वैसे उसके अलावा कहाँ होती है सबसे ज्यादा जो हमें पता है? सूरज पे। सूरज की जो हीट है सारी जो हमारे पास आ रही है फ्रॉम सच अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन दैट इज टेकिंग। ठीक है, जमीन के ऊपर अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो 100 सेकंड से ज्यादा मेंटेन नहीं की जा सकती, बिकॉज न्यूक्लियर फ्यूजन इज व्हेन टू आइसोटोप्स कंबाइंड टुगेदर। अब चूंकि जब दो न्यूक्लियस आपस में मिलने की कोशिश करते हैं ना, तो दोनों न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज हैं, और आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज है, एक लाइक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो आप उसको उसके अंदर घुसा नहीं सकते, यू कैन नॉट फोर्स देम इनटू दिस वन अनलेस you give them lot of energy, which means lot of temperature, which means lot of movement. अब सन के ऊपर वो टेम्परेचर मौजूद है और फिशन हो रही है, तो फ्यूजन हो रही है। लेकिन अगर हम जमीन पे करते हैं और किसी तरह से हम वो रिएक्शन को स्टार्ट भी कर देते हैं, तो जो कंडीशंस हमने इतने हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए की हुई है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और वो सारी सिस्टम जो है ना हमारे काबू से बाहर हो जाता है। देयरफॉर सो फार फ्यूजन कोई नहीं हुई, हाल बता न्यूक्लियर रेडिएशन और न्यूक्लियर फिशन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर रेडिएशंस। नेक्स्ट, अच्छा न्यूक्लियर रेडिएशन जो है ना बेसिकली जैसे आप इस स्लाइड से भी देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव हम कहते हैं फिनोमेना है जिसको रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। उसमें अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं जो हीलियम न्यूक्लियस है, ये भारी होते हैं थोड़े, जैसे शक्ल से भी नजर आया ना भारी है थोड़े से। गैमा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम ले सकते हैं आप लोग जिसका आपकी जिंदगी में वास्ता पड़ता हो? एक्स रेज, लाइट रेज, जहां बैठे हुए ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। द ओनली डिफरेंस इज दैट ऑफ एनर्जी। गैमा रेज जो न्यूक्लियस से निकल के आती है ना, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर हम एक्स रेज डालते हैं अपने जिस्म पर किसी के, तो फ्लैश में से गुजर जाती, हड्डियों में से नहीं गुजर जाती, उसकी एनर्जी कम होती है, तो हड्डियां उसको पेट नजर आती है, आप देख लेंगे हड्डी टूटी भी है। लेकिन अगर आप गैमा रेज डालें उसी बॉडी में, तो वो न सिर्फ होश में से गुजर जाएगी, कोई हड्डी में से भी गुजर जाएगी, और हड्डी के अंदर अगर कोई मसला है ना तो वो भी आपको फिर मिलेगा। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गैमा रेज एंड एक्स रेज, अगर वो एक ही चीज है। और आखिरी जो चीज है वो बेटा पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेसिकली नेगेटिव चार्ज। तो आप देखें, अगर आपके पास आपने एक वेपन बनाने हैं, आपके पास क्या कहना चाहिए, वेपन का लफ्ज़ शायद इस्तेमाल करना सही नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास आप चाहते हैं कि मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की चीजें हों ताकि मैं हिट कर सकूं किसी को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी डिजीज को, किसी ट्यूमर को, तो मेरे पास एक हाई एनर्जी के पार्टिकल हैं जिसको हम अल्फा पार्टिकल कह रहे हैं, मेरे पास एक लो एनर्जी के पार्टिकल हैं जिसको हम बीटा पार्टिकल कह रहे हैं, जो कि छोटे होते हैं बिल्कुल, और एक गैमा रेज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो आई कैन गेट इनटू एनीथिंग, आई कैन लुक इनटू एनीथिंग,
मैं किसी चीज के अंदर भी जाके देख सकता हूँ और किसी चीज को जाके अंदर हिट भी कर सकता हूँ। फर्ज करें कि ट्यूमर है तो मैं बीटा रे बाहर से फेंकूंगा और उसको हिट कर दूंगा और ट्यूमर जो है वो बर्न। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आई जस्ट डिस्क्राइब, न्यूक्लियर रेडिएशन जो है दे कैन बी पुट टू मल्टीपल। हेल्थ सेक्टर का तो मैंने बता दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर वी डू दिस, ताकि हम क्या करते हैं कि अगर फर्ज करें कि आप कोई एग्रीकल्चरिस्ट हैं और आपको कहा जाए इस क्रॉप का कुछ करना है, तो व्हाट वुड यू वांट टू डू विद दैट क्रॉप? ये गंदम है, कपास है, चावल है, तो आपसे कहा जाए यार ये चावल मेरे, ये मैं चावल बोने जा रहा हूँ, मेरे इस बीज में आप कोई अच्छा काम करते हैं, तो आप क्या काम करेंगे? व्हाट वुड यू वांट? Increase productivity. हैं? Increase productivity. यील्ड बढ़ा दें, Yeah. उसी एकड़ से मुझे ज्यादा यील्ड मिले और डिजीज ना आए। डिजीज को मारने के लिए मैं पता है क्या करता हूँ, मैं और उसके लिए मैं उसके अंदर पेस्टिसाइड्स फेंकता हूँ। अगर मेरा वो जो मैंने सीड डाला है वो ऐसा हो कि डिजीज को पकड़े ही ना, तो मुझे पेस्टिसाइड्स कम फेंकने पड़े। दो बातें। तीसरी, यार बच्चों को बोलने दो ना। अगर नहीं आपने इम्तिहान देना तो फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा। सॉरी, मतलब जरा उनको दिमाग एक्सेलरेट होने दो। सॉल्ट रेजिस्टेंस, सैलिनेशन के इश्यूज ना हो तो सॉल्ट रेजिस्टेंस वेरी गुड। यानी मतलब ये कि पानी के बारे में इतना नाजुक मिजाज ना हो। ठीक है, और कुछ और भी? इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। चलिए, मतलब ये कि क्लाइमेट चेंज से मुतासर ना हो, दूसरे लफ्जों में उसकी, अच्छा, और फसल जल्दी उग जाए, बजाय 6 महीने के 5 महीने में निकल जाए तो क्या बुरा है? ठीक है ना, मेरा 1 महीना बच जाता है। 1 महीना बचने का मतलब मेरा रिस्क कम हो जाता है, बारिश होगी से पहले मैंने काट ली। अच्छा, और मैं कोई और चीज लगा सकता हूँ छोटी मोटी इसमें। दाना बढ़ाओ, चावल है, गंदम है, कपास है, बड़ा बूटा है, छोटा ना है। ठीक है ना, तो इस सारी चीजों की प्रोडक्ट, उसको करने का तरीका ये कि आप जो उसका सेल है उसके ऊपर आप रेडिएशन डाल के उसको म्यूटेट कर देते हैं। वो म्यूटेशन होती है तो और चीज बन जाती है, फिर एक को कंबाइन करते हैं, दूसरे को करते हैं, इसको इसके साथ मिलाते हैं, इसको, एंड देन यू ट्राई टू सी वेदर आई कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जल्दी बना सकता हूँ, वाटर रेजिस्टेंस कर सकता हूँ, कम वाटर से काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें। फूड प्रिजर्वेशन, ये क्या है? Shelf life बढ़ जाए, shelf life बढ़ हाँ, जाए। शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। अभी पाकिस्तान से अगर आप आम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से वहां लाए 3-4 दिन में खराब हो जाता है। ठीक है, 5 दिन में। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया भेजना है, अमेरिका भेजना है, तो आपको चाहिए कि 15 दिन चले। तो आप उसके जो बैक्टीरिया खराब करता है, आप उसको रेडिएशन की उसे डोज दें, बैक्टीरिया किल हो जाएगा, तो वो खराब नहीं होगा। सम कंट्रीज रिक्वायर कि आप फूड को इरेडिएट करके हमारे पास भेजें। क्यों? किसी कोई वजह बता सकता है? भाई मेरा प्रॉब्लम है ना, अगर गले में होंगे तो आप उठा के वापस फेंक दोगे और मुझे पैसे भी नहीं दोगे, बट स्टिल यू रिक्वायर कि मैं रिव्यूज करके भेजूं। क्यों? क्योंकि, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट है ये बेटा, वायरसेस और बैक्टीरिया जो आपकी कंट्री से हो, एग्जैक्टली, वेरी स्मार्ट। ठीक है ना, ये तो ठीक है, मेरे पास आ गया आम, मैंने खा लिया, लेकिन आपने पता नहीं क्या आपकी मुल्क के बैक्टीरिया है, आपके मुल्क की चीजें हैं, वो मेरे मुल्क में आ गई, इसलिए आप इरेडिएट करके भेजोगे तो फिर मैं, तो ये बहुत सारी कंट्री जो है ना, दे रिक्वायर कि आप इरेडिएट करें। हम इनका स्टरलाइजेशन करते हैं इक्विपमेंट की, मेडिकल इक्विपमेंट की। पहले बॉयल करके करते थे, बैक्टीरिया मर जाए 15 मिनट बाद, अब वो रेडिएशन से कर लेते हैं। प्लास्टिक में आपने रख दिया पहले सब कुछ, फिर उसको स्टरलाइज किया, आपने कहा ले जिसमें मैंने रेडिएशन डाल दिए, ये अब आप उसको इस्तेमाल। अंडरग्राउंड वाटर, क्योंकि रेडिएशन जब पेनिट्रेट कर जाती है तो मैं जमीन को खोदे बगैर देख सकता हूँ नीचे पानी का फ्लो। शालीमार बाग है लाहौर में, उसमें एकदम मतलब हुआ लीकेज हो रही है। अब वो पता नहीं 4-5 साल पहले कब बना था, किसके जमाने में बना था? शाहजहां के जमाने में। शाहजहां ज्यादा बना रहा था, खैर पता नहीं मुझे, यही शाहजहां के जमाने में हुआ। अब उन्होंने जमीन के नीचे पानी के रास्ते बना रखे थे, अब उसमें से कई लीकेज हो रही है। आपको क्या पता कहाँ से हो रही है? क्या आप सारा शालीमार बाग उखाड़ डालोगे? अगर आप उसमें रेडिएशन डाल दें, रेडियो एक्टिव, और फिर ऊपर आप डिटेक्टर लेके फिरें, तो जहाँ पे आपको लगे ना कि यहाँ पे पानी जमा हो रहा है नीचे, तो वहाँ पे रेडिएशन भी बढ़ जाएगी। इसका इंडस्ट्री में भी आप इसको काम कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये तो साइज में तो पानी भरा हुआ नजर भी आ रहा है, फर्स्ट करें मैं कहूँगी स्टील का, सॉलिड स्टील तो हमें कई दफा चाहिए होती है ना प्लांट्स पे, ये अंदर बाहर 100% सॉलिड स्टील है, बाहर तो आपको सिर्फ एक सर्कल नजर आ रहा है, बोला आपको क्या पता अंदर सॉलिड स्टील है कि नहीं। अगर आप उस पर रेडिएशन डालेंगे यू कैन सी इनसाइड।
के अंदर वैक्यूम तो नहीं है, हॉलो तो नहीं है अंदर से कि मुझे बाहर के सॉलिड स्टेट है और अंदर जो है इसने खाली रखा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इसका फायदा। एंड देन सिक्योरिटी, एक ट्रक जा रहा है बड़ा सारा, आपको नहीं पता इसमें क्या चीज है, आप बाहर से देख लें, आप उस पर रेडिएशन डालें, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या चीज है। सो दे प्रोवाइड यू आइस एंड दे प्रोवाइड यू एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच यू कैन इम्पार्ट एनर्जी। उस एनर्जी से आप, एंड दे हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक, दिस रेडिएशन जो सेल को ट्रांसम्यूट कर देते हैं एज दे डू इन दिस एग्रीकल्चर। तो क्या ह्यूमन सेल नहीं ट्रांसम्यूट करते होंगे? इंसानों के सेल ट्रांसम्यूट करते होंगे कि नहीं? Yes or no? Yes. कैंसर ट्रीटमेंट में हम उसको एग्जैक्टली, कैंसर ट्रीटमेंट में हम उसको जो है ना, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए तो हम उसको चाहते हैं कि उसको किल करते हैं, लेकिन उसमें मेरे हेल्दी सेल भी तो खराब हो रहा है ना। तो इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है रेडिएशन का वो ये है कि अगर आपकी रेडिएशन की तार एक लेवल से कम है तो फिर सेल इफेक्ट होंगे, लेकिन ह्यूमन बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि जो सेल डेड हो जाते हैं उनकी जगह दूसरी बनाता रहेगा। दिन में वैसे भी पता नहीं कितने हजारों लाखों सेल रोज रिकंस्ट्रक्ट होते रहते हैं, रीबिल्ड होते रहते हैं। अगर म्यूटेटेड सेल की या डिस्ट्रॉयड सेल की तादाद कम है तो फिर मुझे कोई मसला नहीं है, और अभी हम देखेंगे। लेकिन अगर उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है फिर मेरे लिए ठीक नहीं है। कितनी वो क्वांटिटी है जिसमें मैं सेफ रह सकता हूँ, विल सी दैट लेटर। अच्छा, अब एक बात आखिरी हम करके फिर हम थोड़ी सी ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे। फर्स्ट करें कि एक आदमी के कैंसर की ट्रीटमेंट करना है और उसका कैंसर जो है ना उसके पेट के अंदर है, स्टोमक में है, ठीक है। अब जब मैं उसके ऊपर रेडिएशन डालता हूँ, शायद आपको कहीं ना कहीं किसी ने पास्ता पड़ जाता है, रेडियोथेरेपी हो रही है, तो रेडिएशन क्या करती है, मैंने गैमा रेज डालनी या बीटा रेज डालनी, और मेरा पर्पज है कि मैं उस सेल को किल कर दूं ताकि वो बंदा क्योर हो जाए और सेल कैंसर जो है ना वो डेड हो जाए, वो जो ट्यूमर है। लेकिन जब मैं उसके ऊपर डाल रहा हूँ एंड आई एम पुटिंग इन एनफ रेडिएशन, आई एम पुटिंग इन एनफ डोज टू किल दैट ट्यूमर, तो मेरे जो हेल्दी सेल है वो किल नहीं होंगे। ये जो मैं क्या क्या घूम लेता हूँ आप हैं, फिर क्या बात हुई, आपने एक सेल किल किया और मेरे सारी बॉडी का बेड़ा गर्क कर दिया। Then how then can you use radiations inside the body? particular पॉइंटेड है ना, मेरे स्टोमक में है, अब आपने उसको किल करना है तो आपने उसमें रेडिएशन, वो आमतौर पे कहते हैं 26 दफा आओ, 26 डोजों में देंगे ये हम आपको, 24 डोजों में देंगे, एक दिन में नहीं दे देते सारी, दे सकते हैं लेकिन एक दिन में दे 26 दफा। आप रोज जाते हैं उसको फायर करते हैं, उसके ऊपर फिर फायर करते हैं, फिर फायर करते हैं। द इंटेंट इज टू किल द ट्यूमर। ये मैं बता रहा हूँ कि पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, द इंटेंट इज टू किल द ट्यूमर। अब वो ट्यूमर जो है वो तो मर जाएगा, लेकिन उसके रास्ते में जो बचे उसका क्या बनेगा, वो भी तो कोलेटरल डैमेज तो होगा ना, मतलब वो तो फिर फायदा क्या है, वो तो वो सारा कैंसरस बन जाएगा, खून और पीना पड़ेगा। नहीं, उसी पॉइंट पे जा रहे हैं, रास्ता तो वही है ना। क्या वो मैं पेट काट के अगर तो फिर तो ठीक है, मैंने रास्ता बना दिया और डाल दी, तो अगर मेरे सरफेस पे है, नाक पे इधर है, ऊपर से दो डाल दी फिर ठीक है। If it is inside the body, you're not opening the body, you have to go through the body. तो फिर जितनी डोज उसको मिलेगी और इधर तो ज्यादा मिलेगी। अगर आप कोई मारते हैं जोर से चीज, तो पहले शुरू में जो आएगा उसको चोट ज्यादा लगेगी ना, ज्यादा तो वहीं रुक जाएगा, वो फिर थोड़ा अंदर जाएगा, कम अंदर जाएगा। अंदर वाले को तो बाहर वाली चीज शील्ड कर रही है ना, प्रोटेक्ट कर रही है। कंट्रोल्ड रेडिएशन का भी तो कंट्रोल तो है ना, लेकिन बाहर वाले को क्यों डालने से रोके? एंड द आंसर, ये सवाल इतना सिंपल नहीं है, लेकिन अगर आपको भी वो ये करते हैं कि दे गो इनटू योर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। Yeah, the reason I spent so much time on it and the reason I gave this example, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि radiation per se by themselves, as long as you can limit their quantity, are not harmful, are not bad for you. तो वो ये करते हैं कि अगर आपने यहाँ स्टोमक में डालना है, एक दिन इधर से डालेंगे, अगले दिन इधर से डालेंगे, फिर इधर से डालेंगे, फिर इधर से डालेंगे, फिर पीछे से डालेंगे, फिर इधर से डालेंगे, फिर क्या होगा, उस सेंटर पे तो हमेशा पूरी डोज मिल रही है और बाकी जगह कम मिल, स्प्रेड आउट हो गई। तो वो जो इफेक्ट है ना वो केयर कर लेगा अपने आप को, लेकिन वो बेचारा जिसके ऊपर धड़ाधड़ चारों रोज बमबारी हो रही है ना, वो किल। तो चलें, वी कैन नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलें आगे चलिए। तो ये हमने कर ही लिया तकरीबन, आगे चलें नेक्स्ट। ये हमारे मेडिकल सेंटर्स हैं, इनका
अक्सर आपने सुना होगा कि 19 मेडिकल सेंटर है, इसमें हम क्या करते हैं, तो डायग्नोस्टिक्स एंड रेडिएशन कैंसर की ट्रीटमेंट, और कैसे करते हैं, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। तो उसके लिए आपको एक रेडिएशन का सोर्स चाहिए, आप रेडिएशन का सोर्स लें, और उसके बाद आप उससे डायग्नोस्टिक्स कैसे करेंगे आप रेडिएशन से, जैसे एक्सरे से करते हैं। लेकिन एक रेडिएशन से करने का एक और भी तरीका है। फर्स्ट करें कि मेरे पास ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, मैंने इसको खा लिया तो वो तो मेरे स्टमक में चला जाएगा, इधर ब्लड में भी आएगा लेकिन कल तक आएगा। अगर मैं इसको अपनी इंट्रावेनस करके अपनी इस वेन में इंजेक्ट कर दूं किसी तरीके से, फिर तो मेरी बॉडी के अंदर चला गया ना, और ये रेडियो एक्टिव भी है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने फर्स्ट करने के मुझे ये देखना है कि मेरी हार्ट की जो है क्या आर्टरीज और दूसरी वो ब्लॉक तो नहीं होगी। तो जब मैंने अपनी हार्ट यहाँ से डाल दिया ना ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप, अब उसके ऊपर मैंने कैमरा लगाया जो चेक करा रेडिएशन, तो मैं देखता हूँ यहाँ भी रेडिएशन, यहाँ भी जा रहा है ये लिक्विड, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि ये ब्लॉक है। तो आई कैन टेल कि कहाँ पे ब्लॉक है, कहीं भी बॉडी में जो। फिर इसमें ये होता है कि हम वो चीज इस्तेमाल करते हैं ब्लड में इंजेक्ट करने के लिए जो किसी खास जगह जाके बैठ जाए। मसलन कोई चीज अगर मुझे फर्स्ट करें इसका प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो मैं आयोडीन इंजेक्ट करूँगा। आयोडीन की खूबी है कि वो हमेशा लिवर थायराइड में जाकर बैठ जाता है, तो वो सारी आयोडीन थायराइड में बैठ जाएगी। जब वहाँ बैठ जाएगी तो उसकी जो रेडिएशन जो उससे निकल रही है उसकी पिक्चर से मिटाएं, और ट्रीटमेंट का हमने पहले बता दिया। तो तकरीबन पाकिस्तान के 1 मिलियन पेशेंट्स हर साल हम इसमें देखते हैं एटॉमिक मिशन के हॉस्पिटल में, और तकरीबन 3 नेक्स्ट, और 4 एग्रीकल्चर सेंटर हैं, उसमें उसी तरह से रेडिएशन इस्तेमाल की जा सकती है, दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। नेक्स्ट, ये वो हैं जो हमने कहा था ना कि फूड की प्रिजर्वेशन के लिए, नीचे यहाँ नजर तो नहीं आ रहा मुझे, वीडियो दिखानी चाहिए, लेकिन नीचे जो ये क्या कहते हैं, ये हाँ ये जो है ना, जैसे ये खाना है, फूड है, और यूं करके चल रहा है रेल की, तो रेडियो एक्टिव सोर्स ऊपर रखा हुआ है, ये यूं करके घूमता रहता है और उस पर एक्सपोज होता रहता है। जब एक खास अमाउंट ऑफ रेडिएशन मिल जाती है आप इसको बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट, ये वही है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मुख्तलिफ चीज़ों की, कि आप उस चीज़ों के अंदर देख सकते हैं, बता सकते हैं। तो कई जगह इस्तेमाल होती है, ऑयल गैस प्लांट्स में, फर्टिलाइजर्स में, रिफाइनरीज में। नेक्स्ट, ये जैसे मैंने भी कहा था ना, ट्रक है, ट्रक के अंदर ये सामान लदा हुआ है, ट्रक को खोले बगैर अंदर जाए, बगैर रेडिएशन डाल के उन्होंने, ये डेमो है, उन्होंने तस्वीर ली कि देखें जी इस ट्रक के अंदर ये, बिकॉज आई कैन सी इनसाइड बिकॉज ऑफ द रेडिएशन व्हिच आर गामा रे। नेक्स्ट, अच्छा, अब ये थोड़ा सा वी जस्ट टॉक अबाउट, मैंने आपसे कहा था कि ये एक खास हद तक रेडिएशन जो है ना वो आपको कुछ नहीं करता। अब जो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आपके पास, और आप भी मेरे पास बैठे, ऑल ऑफ अस आर गेटिंग रेडिएशन, कुछ आसमान से आ रही हैं, कुछ जमीन से आ रही हैं, कुछ हमारी बॉडी के अंदर जो आइसोटोप्स हैं वो भी रिजेक्ट है, वो भी मिट कर रहे हैं, कुछ दीवारों में से इधर से मटेरियल से आ रही हैं। रफली हमारी जो बैकग्राउंड डोज है, एज यू कैन सी फ्रॉम ये 3 मिली सीवर्ट हमें पर ईयर बैकग्राउंड की वजह से मिल रही है डोज, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट दैट वी हैव। जब हम एक्सरे कराते हैं तो हमें 2 मिली सीवर्ट 1 सेकंड में डोज मिल जाती है, और जब सीटी स्कैन कराते हैं तो हमें 20 मिली सीवर्ट सीटी स्कैन की डोज मिल जाती है। और जो ये जो आर्टिफिशियल मैकेनिज्म की डोज है एक्सटर्नल, अगर अमेरिकन को आप लें, एक एवरेज अमेरिकन, वो एक एवरेज पाकिस्तानी से बहुत ज्यादा डोज खाता है। क्यों? आर्टिफिशियल जो डोज है, जैसे अभी हमने जिक्र किया ना, एक्सरे, सीटी स्कैन, ये डोज एक अमेरिकन, एवरेज पाकिस्तानी से बहुत ज्यादा खाता है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ टेस्टिंग ज्यादा होती है, उनके पास पैसे हैं, दे कैन अफोर्ड इट, दे कैन गो टू द हॉस्पिटल, दे हैव अ सिस्टम, दे कैन गेट द एक्सरे, सीटी स्कैन, एक्सरे, सीटी स्कैन। हमारे तो बंदा कराता ही नहीं है एक्सरे से सीटी स्कैन, इतने पैसे का कौन कराएगा? लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दिस थिंग। वहाँ पे रूटीन में अमेरिकन तो सिस्टम यही है ना, टेस्ट कराओ और फिर डॉक्टर ओपिनियन करे, अपनी अकल तो इस्तेमाल नहीं करते। और जो इंटरनेशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन का लॉ है वो ये है कि चाहे मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाऊं, चाहे मैं और कोई काम करूं, चाहे मैं रेडिएशन का हॉस्पिटल सेटअप करूं, आम आदमी को डोज जो है वो 1 मिली सीवर्ट पर ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस आई मस्ट इंश्योर
तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज कि 3 मिली सीवर्ट मुझे रूटीन में मिल रही है, 20 मिली सीवर्ट मुझे एक सीटी स्कैन में मिलती है, और 1 मिली सीवर्ट से ज्यादा मैं किसी भी एक्टिविटी से नहीं दूंगा। तो अगर इससे ज्यादा आपको डोज मिल रही है, पब्लिक को डोज मिल रही है, तो रेगुलेटर जो है, रेगुलेटरी अथॉरिटी वुड नॉट अलाउ टू ऑपरेट दैट वे। एक एक्सीडेंट हो जाए वो कहलाता सिचुएशन है, उसमें भी हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे। और एक दूसरी जो स्लाइड में आपको चीज नजर आएगी कि हमने कहा कि आपको तो 3 मिल रही है ना, और ईरान में एक जगह है जिनको 10 मिल रही है, और ब्राजील में जो है वो 5 मिल रही है, और केरला इंडिया में अगर आप देखें मैक्सिमम 35 है। इंडिया का एक केरला एक स्टेट है, उसमें जो मैक्सिमम डोज है वो 35 है, और वहाँ के लोगों का मैथमेटिक्स कहते हैं बहुत अच्छा है। तो एनीवेज मतलब ये कि ये डोजेज जो है ना इससे ज्यादा भी मिलती हैं। और नेक्स्ट जी नेचुरली अक्टिंग रेडिएशन है जो बैकग्राउंड हाँ जैसे आपको मिल रही है, एनवायरमेंट से आपको 3 मिल रही है ना, केरला में जो बंदा बैठा उसे 35 मिल रही है। एंड द रीजन आई शो दिस स्लाइड इज बिकॉज आई वांट टू मेक दिस पॉइंट कि रेडिएशन कोई ऐसी खौफनाक चीज नहीं है कि अगर एक भी रेडिएशन में पास हो जाएगी तो बस मैं मारा गया। ठीक है, एज लॉन्ग एज इट रिमेन लिमिट, और जो हम लिमिट रख रहे हैं वो 1 मिलीसीवर्ट की। आप ये देखें 3 बैकग्राउंड है और 1 मिलीसीवर्ट की मैं लिमिट रख रहा हूँ, इससे ज्यादा की हरकत नहीं करनी कोई की जिससे इसे 1 मिलीसीवर्ट से ज्यादा मिले। ऐसे डेंजरस लेवल क्या है? हाँ आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। गुड क्वेश्चन, चलेंगे अगली स्लाइड करें, अगली स्लाइड। अच्छा ये एक बड़ा मजेदार स्लाइड है जो मैं आमतौर पर दिखाता हूँ। इफ आई फ्लाई फ्रॉम कराची, फ्रॉम हियर टू कराची एंड बैक, तो मैं थोड़ा सा ऊपर रह जाऊंगा ना, तो कॉस्मिक रेडिएशन डोज मुझे ज्यादा मिलेगी। एक सेकंड, थोड़ी सी डोज जो है ना मुझे ज्यादा मिलेगी। वो डोज इतनी है जितनी मुझे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की बाउंड्री पे रहने पे 1 साल में मिलेगी। जैसे आप देखें डोज यहाँ पे जो मिल रही है मुझे फ्लाई करने के लिए 190 मिनट में एयर में होऊंगा, 95 मिनट आने के, 95 मिनट जाने के, और जो डोज मुझे मिलेगी वो 0.01 मिलीसीवर्ट है। और अगर मैं एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की बाउंड्री के बाहर रहूंगा, ये कैनो की बाउंड्री के बाहर 1 साल रहूंगा तो मुझे 0.01 मिलेगा। और अगर मैं अमेरिका चला गया और अमेरिका जाके वापस आया तो मुझे 10-15 साल की डोज जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहर रहने की वो मुझे एक फ्लाइट में मिलती है। आप अंदाजा लगाएं पायलट्स को कितनी डोज मिलती होगी, वो रोज आते जाते हैं, वो क्या करते हैं। तो पॉइंट इज कि कुछ हद तक तो डोज लिमिट है, लेकिन इन यूरोप जो पायलट्स फ्लाई करते हैं हवाई जहाज वो उनके डोज का ट्रैक भी रखते हैं। अगर उनको लगे कि इसके फ्लाइंग आवर्स बहुत ज्यादा हो गए उसके बाद तो ठीक है तुम 15 दिन ना करो ताकि तुम्हारी साल की कोटा जो है ना वो एक्सीड ना हो। ठीक है, आप अगली चलिए स्लाइड। ये है, तो हमने कहा कि मेरी बैकग्राउंड डोज है वो 3 मिलीसीवर्ट है और मेरी अलाउड मैक्सिमम डोज है 1 मिलीसीवर्ट है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट की दीवार के बाहर 0.1 सीवर्ट है। अभी तक जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि 250 मिलीसीवर्ट से डोज अगर कम हो तो कोई इफेक्ट नहीं, और 250 से 1000 तक हो तो कैंसर का रिस्क है। ऑफ कोर्स अगर 2000 मिलीसीवर्ट से ज्यादा हो जाए तो बंदा नहीं फारिग हो सकता है। अगर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो वहां की डोज जो है वो थाउजेंड्स में चली जाएगी। तो जो डायरेक्टली एक्सपोज होंगे उन रेडिएशन से वो तो डोज की वजह से ही मर जाएंगे, अगर हीट की वजह से ना मरे, और अगर शॉक की वजह से ना मरे वो भी अभी हमको आगे बेटा नेक्स्ट। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया दिखाने के लिए कि रेडिएशन इतनी बुरी नहीं है, वी कैन टैकल देम, वी कैन रिस्पेक्ट देम, कैन शील्ड आवरसेल्फ विद देम, लेकिन आम लोगों में उसका तासीर है ना बड़ा खौफनाक है। और इसलिए भी खौफनाक हो जाता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का किसी बंदे को दिखाते हैं तो वो उसने एक हाथ में रेडिएशन डिटेक्टर पकड़ा हुआ है, ठीक है, एक उसने मुंह पे वो लगाया हुआ है, वर्दी पहनी हुई, मतलब पता नहीं किस तरह के उसमें जा रहा है। ये तो प्रिकॉशनरी मेजर्स है ना, दे डू नॉट वांट पीपल टू गेट अननेसेसरली एक्सपोज्ड। लेकिन बाहर से जो बंदा देखता है कहता है बहुत मुसीबत में फंसने वाला है, तो कम से कम मैं इससे दूर। चलें नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं दूसरे, इसमें कुछ बात पूछना चाहते हैं आप। एक एरिया तो हमने कवर कर लिया था सर। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो अभी आपने पहले अंडरग्राउंड वाटर स्टडीज की बात उसमें पीसफुल उसकी एप्लीकेशन में, तो सर ये जो वेस्ट वाटर है क्या इसको भी हम क्लीन वाटर में चेंज कर सकते हैं? कौन सा वाटर? वेस्ट वाटर या डिसैलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं, देखिए वेस्ट वाटर को मैं रेडिएशन से चेंज करने को तो ऐसे कर सकता हूँ कि मैं कहूँ कि मैं उनके अंदर जो गंदी चीज है उसको मैं ट्रांसम्यूट कर दूंगा, उस पर रेडिएशन डालूंगा, कुछ और बन जाएगा, तो बिगर मैस। मुझे एक तो रेडिएशन के लिए कुछ चाहिए जो महंगा है, फिर जब कुछ चीजें गंदी खराब हो जाएंगी तो अच्छी चीजें गंदी भी हो सकती हैं, वो काम का रेडियो एक्टिव हो जाएंगे, तो इसलिए रेडिएशन से मैं वो तो साफ नहीं करूँगा।
सर डिसैलिनेशन क्या है? डिसैलिनेशन का कॉन्सेप्ट अभी आगे हम डिसैलिनेशन तो बेसिकली ये है कि आपको जो पानी है उसमें उसको अगर गर्म करें आप तो उसमें से वो जो पानी जो ऊपर उठेगा वो तो साफ होगा और जो नमक है वो नीचे रह जाएगा। तो आप समंदर के किनारे एक प्लांट लगा लें बॉयलर, और उसके बाद उसमें वो पानी को गर्म करते रहें तो साफ पानी को आप इधर ले जाएं और जो नीचे रह जाएगा पानी हल्का वो सेलाइन हो जाएगा, उसको ब्राइन कहते हैं, उसमें नमक के कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। इस तरह से आपको डिसैलिनेटेड वाटर मिल जाए। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम इसलिए कहते हैं कि डिसैलिनेशन आपको तो खैर अभी पता, लेकिन जो भी आप न्यूक्लियर पावर प्लांट जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसका 2/3 जो है डंप कर देता है समंदर में, दरिया में वापस। वो एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो सकती, सिर्फ 1/3 ऑफ द टोटल थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कैन बी कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिक। कभी आप देख लें अगर शहर के अंदर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा तो उसका कूलिंग टावर लगेगा, और वैसे अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो दरिया के किनारे होगा या समंदर के किनारे होगा, क्योंकि उसे ठंडा पानी चाहिए अपने आप को ठंडा करने के लिए। अगर आपको बहुत मुश्किल हो तो आप घर में देख लें जिसकी एयर कंडीशनर लगा, उसको बाहर एक कूलिंग के लिए चाहिए सिस्टम, वरना वो आपको ठंडा भी नहीं कर सकता, गर्म भी नहीं कर सकता, अनलेस ये कंप्लीट एक प्रोसेस है। थोड़ा लंबा काम है, बट दुनिया में अल्लाह मैंने जैसे जिसको कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज इफेक्ट वट एवर, जब भी हम कोई काम करते हैं नेचर में, जब जिसको कहते हैं मदर नेचर के साथ टिंकर करते हैं, तो ये नहीं हो सकता है कि उसका कोई प्राइस ना पे करें। तो बहुत से जो कहते हैं ना कि जी अगर आप न्यूक्लियर पढ़ेंगे तो वेस्ट जनरेट हो जाएगा, एनीथिंग यू डू एवरीथिंग यू डू विल हैव एन इफेक्ट। नेचर को चेंज कर, जब नेचर को चेंज करेगा तो उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, कुछ नहीं। ऑल यू हैव टू डू, ऑल यू कैन डू इज दैट यू मेक श्योर कि जो उसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो ज्यादा हो और उसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उसको आप मिनिमाइज करें। एंड यू ऑल्सो मेक एन एफर्ट कि पीपल आर नॉट एक्सपोज टू दोज नेगेटिव इफेक्ट। फर्स्ट करें कि मैं क्यों नहीं, मैं पाकिस्तान के पानी का और दुनिया भर वाले अपने पानी का मसला हल कर लेते कि फटाफट जनाब समंदर में बहुत पानी है उसमें लगाएं डिसैलिनेशन प्लांट, उसके ऊपर लगाएं। वो कहते हैं ना एक जमाने में जैसे पाकिस्तान में कितना पानी कम होता जा रहा है, एक जमाने में कहते हैं पानी जो है शायद तेल से ज्यादा कीमती हो जाएगा बिकॉज ऑफ नो वाटर। पानी तो प्योर वाटर है, ड्रिंकेबल वाटर, उसकी क्वांटिटी बहुत कम जो समंदर से उठता है वापस, बस और तो कोई पानी आ नहीं रहा कहीं से, तो नीचे जा रहा है वो भी वही पानी ऊपर से नीचे चला जाता है। तो वाई, बिकॉज जब मैं उस पानी में से समंदर में से जो पानी है ना उसमें से पानी निकालूंगा तो अब नीचे जो मेरे क्वांटिटी वापस आएगी ना बहुत सॉल्टिश है, सॉल्ट कंटेंट। अब वो इतना जितना सॉल्ट पहले मतलब 1 टन पानी में था वो फर्ज करेंगे कुछ किलो पानी में, तो जब मैं उस पानी को समुद्र के अंदर वापस फेंकूंगा ना तो जहां तक मैं उस पानी को फेंकता चला जाऊंगा ओवर द पीरियड सारी मेरी लाइफ खत्म हो, क्योंकि वो तो इतने नमक देखने का आदी नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि मैं इस पानी को ले जाके, आप कहेंगे कि बारिश में भी तो पानी उठता है, बादल जाते हैं, वो तो पूरे समंदर से उठाता है, कोई कोने से थोड़ी उठाता है, तो हम तो एक कोने से उठाएंगे और कोने में डाल देंगे। आप कहें नहीं आप छोड़ो तो मरीन लाइफ को जना आगे जाकर फेंके। मैं कहता हूँ कि मैं इसको 10-15 पाइपलाइन इज वेरी एक्सपेंसिव। समंदर में आप कैसे डालोगे पाइपलाइन की, और वो एक वैसे भी नेवी के लिए घर बता आपको गार्ड रखना पड़ेगा तो समंदर में जहाज ना आकर फिर बना जाएगा। तो मतलब ये कि वट एवर यू डू अपनी लाइफ को आसान करने के लिए उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट जरूर होता है। जब एयर कंडीशनर आपके घर को ठंडा कर रहा होता है, कमरे को यहाँ कर रहा है, तो बाहर कोई आदमी गर्मी खा रहा है इसकी, समझे, बाहर हीट स्पिट कर रहा है ना, ये उन लोगों के लिए ऑलरेडी जो गर्मी में बर्दाश्त कर रहे हैं उनको एडिशनल डोज उसकी आ रही है। तो ये है ऑल यू कैन डू इज मिनिमाइज दिस नेगेटिव। चलिए जी, अब न्यूक्लियर फिशन क्या होती है, आई फिनिश एट 15 ठीक है ना, ताकि कोई अभी भी बीच में लाइक ऐसा देखो प्लीज सवाल पूछ लो अगर पूछना है तो। जो आप इसमें इफेक्टिव मेजर्स में कुछ हो सकते हैं। हाँ, अच्छा सवाल है, मुझे वो स्लाइड डाल दो। देखिए प्रोटेक्टिव मेजर रेडिएशन से क्या होते हैं, 3 बेसिक। नंबर 1 स्टे अवे फ्रॉम, ठीक है। अब मैं वहाँ एक रेडिएशन सोर्स रखा हुआ है, जैसे लाइट है, अगर यहाँ पे एक लाइट जल रही है तो मुझे इतनी रोशनी आ रही है, इस लाइट को आप यहाँ से 200 मीटर दूर पे चला दें तो मेरे पास रोशनी कम आएगी। एक्सरे सोर्स यहाँ रखा हुआ है या हमारे सोर्स यहाँ रखा हुआ है तो मुझे ज़्यादा डोज दे रहा है। वन थिंग इज मेंटेन योर डिस्टेंस, दैट इज व्हाई व्हेन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर बिल्ट तो उसके आसपास है कुछ इलाका उसमें कहते हैं यहाँ कोई बंदा ना रहे, तो दैट इज स्टे अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर। सेकंड, यू पुट अ शील्ड अराउंड यू। अब जैसे जो अल्फा रेज हैं वो तो एक कागज से भी रुक जाते हैं, बीटा रेज भी रुक जाती हैं और गामा रेज भी आहिस्ता आहिस्ता
तो आप अपने, अगर आपने रेडिएटिव एरिया में जाना, ये जो लिबास उन्होंने पहना था जब, वो शील्ड है। अगर मैं रेडिएटिव एरिया में जाता हूँ, या मैं अपने सामने लेड की शील्ड रख देता हूँ ताकि गैमा रेज उसके अंदर से ना घुसे, शील्ड है। और तीसरा जो प्रोटेक्शन का तरीका है कि टाइम, जितने भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं जो खुद ब खुद रेडिएशन करते हैं, वो डिके करते जाते हैं विद टाइम। उनकी हाफ लाइफ होती है, एक हाफ लाइफ में वो आधे रह जाते हैं। बस कहें कोई आइसोटोप है, उसकी हाफ लाइफ जो है ना 2 दिन है, तो 2 दिन के बाद कितना रह जाएगा? 50%। 4 दिन के बाद 25%, 6 दिन के बाद 12%, 8 दिन के बाद 6%, 10 दिन के बाद 3%, 12 दिन के बाद 1.5%। अगर पहले उसमें से 100 पार्टिकल निकल रहे थे, तो 12 दिन के 6 हाफ लाइफ के बाद अब उसमें सिर्फ 1 पार्टिकल निकल। तो टाइम इज ऑल्सो अ वेरी मेजर फैक्टर। अगर रेडियो कोई एक्सीडेंट हो गया, मैं चलो भाई मैं 2 महीने वहां नहीं जाऊँ, 2 महीने के बाद वो ठीक हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। मेरा फ्यूल है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो रेडियो एक्टिव है। जब वो अंदर से बाहर आता है तो बहुत गर्म होता है, उसमें बहुत रेडिएशन आ रही है। मैंने उसको स्विमिंग पूल में फेंक 10 साल के, बहुत सारी रेडिएशन जो है ना उसमें से खत्म। अच्छा सवाल था, थैंक यू। अच्छा, ये फिशन का फिनोमेना है जो आप देखें सामने। एक न्यूट्रॉन आता है जिससे बम भी बनते हैं, रिएक्टर भी। एक न्यूट्रॉन आता है, वो उसमें फिशन कॉज करता है, न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है, इसमें न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और एनर्जी भी निकलती है। एनर्जी तो मेरे काम की है, और न्यूट्रॉन मैंने इसलिए काम किया है कि 2 न्यूट्रॉन इसमें निकल रहे हैं। इफ समहाउ आई कैन मेक श्योर दैट वन ऑफ दीज न्यूट्रॉन्स कॉज अनदर फिशन, तो आई हैव अ सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन। वो होता ही रहेगा जब तक उसे यूरेनियम मिलती रहेगी। वो न्यूट्रॉन फिशन कॉज करेगा, फिर फिशन कॉज करेगा, फिर फिशन कॉज करेगा, एंड दिस थिंग विल कंटिन्यू फॉरएवर एज लॉन्ग एज देयर इज यूरेनियम। तो इसी सिस्टम के ऊपर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में आगे जी चलें आगे। अच्छा, इसी सिस्टम के ऊपर हम बम बनाते हैं। सिंपल बम का एक नक्शा सा है कि आपके बीच में आप फिसाइल मटेरियल रख देते हैं, उसके चारों तरफ हाई एक्सप्लोसिव रख देते हैं, एंड देन यू इम्प्लोड। इम्प्लोड में आप उसको अंदर की तरफ दबाते हैं। जब आप उसको अंदर की तरफ दबाते हैं तो जो आपका फिसाइल मटेरियल है वो सुकड़ जाता है, और उसकी एनर्जी कितनी होती है आप देखें कि सॉलिड मटेरियल को दबा रहा है वो, आपको बहुत हाई लेवल की इम्प्लोजन चाहिए जो सॉलिड मटेरियल को दबाए। वो मटेरियल को इतने जोर से दबाता है कि वो मटेरियल तकरीबन जो है ना वो विस्कस फ्लूइड की तरह हो जाता है, इतना जोर उसके ऊपर लगा। जब वो कंप्रेस होता है तो उसका फायदा आपको ये होता है कि जो फिशन से न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं सिवाय इसके जैसे यूरेनियम में जाके टकराए, क्योंकि वो सारे उन्होंने कंप्रेस करके छोटा कर दिया ना। तो सारे न्यूट्रॉन जो निकलते हैं, वैसे तो ये खुला खुला मैदान है, वो बाहर निकल गया, इधर निकल गया, उधर निकल गया, रहा है वो, यहाँ पे नो प्लेस टू गो, तो देयरफॉर इट हिट्स अनदर, इट हिट्स अनदर, दैट एक्सेलरेट्स द। दूसरा काम हम ये करते हैं कि हम उसको एनरिच कर देते हैं। हम कहते हैं जो बम होता है जैसे उसमें यूरेनियम की 90% से ज्यादा होता है, इट्स ऑल फिसाइल मटेरियल, हर तरफ फिसाइल मटेरियल है, न्यूट्रॉन के पास जाने का रास्ता कोई नहीं, तो फिर वो बहुत सारी एनर्जी एकदम रिलीज कर देता है। अगली स्लाइड दिखाएं। तो ये कंप्रेस होके वो आग का समझिए आप छोटा सा गोला बन जाता है। जितनी देर तक कंप्रेस रहेगा उतनी देर तक उसमें एनर्जी जनरेट हो जाएगी, लेकिन आप जाकर रोक नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर बहुत एनर्जी जनरेट होती है, एक्सपोर्ट करता है। फिर क्या होगा, एकदम बहुत सारी गर्मी प्रोड्यूस। उस गर्मी से क्या होगा कि हवा जो है ना उड़ जाएगी, गर्म हवा, हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाएगी। ये एक मुसीबत का हिस्सा है। दूसरा मुसीबत जैसे है कि जब यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो बाहर की हवा जो चारों तरफ की है वो इतनी तेज अंदर दौड़ के आएगी तो वो हर रास्ते की हर चीज को फारिग कर देगी। दैट इज द सेकंड। अगली स्लाइड का है। ये एक न्यूक्लियर, ये आम पावर प्लांट है, तो सिंपल जैसे मैंने कहा था ना, स्टीम जनरेटर है। यहाँ पे आपने स्टीम बनाई, स्टीम ये टरबाइन में गई, यहाँ से बिजली बनी, और ये वो कंडेंसर है, और ये पानी हुआ है जो समंदर में जा रहा है, इसको आपको ठंडा करना पड़ता है, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करके फिर पंप से आप उसे वापस डाल देते हैं। ठीक है, ये चल रहा है ना, नजर आ रहा है। अच्छा सॉरी, ऐसे बता रहा हूँ, वो भी नहीं, अभी वो कर रहे हैं पॉइंट, वो क्या करें, चलें। तो ये मतलब पूरा एक सिस्टम है, आप देखें। The only difference, the reason I showed this, the only difference between a nuclear power plant and this conventional thermal power plant जिसमें तेल, गैस, ऑयल कुछ भी जल रहा है, इसके जो अंदर का, अगली स्लाइड एक क्लिक करें, अंदर का सिस्टम जो है ना वो न्यूक्लियर है। अब ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो जैसे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए रेडिएशन जो है सर उसी के अंदर ही कंट्रोल है। रेडिएशन, वापस जाएं, स्लाइड पे वापस जाएं।
ये जो ये कंटेनमेंट स्ट्रक्चर हाँ यार वो है पॉइंटर है पॉइंटर। अच्छा नेवर माइंड, देखिए जो पीले रंग का है ना ये है, इसको हम कहते हैं रिएक्टर प्रेशर वेसल। पहले तो जो सारी रेडिएशन है ना वो आपकी फ्यूल बंडल के अंदर कंटेन होगी, जो इसके अंदर फ्यूल असेंबली जिसमें फ्यूल है। फिर अगर वहां से रेडिएशन निकल गई तो इस प्रेशर वेसल के अंदर होगी जो पीले रंग का टप्पा है। अगर उसमें से भी निकल गई तो फिर एक कंटेनमेंट में कंटेन होगी जो ऊपर बनी हुई है बिल्डिंग, कंटेनमेंट स्ट्रक्चर इज एंड दैट इज द होल थिंग। कंक्रीट का, बिल्कुल लोहे का, और इसकी थिकनेस होती है 1.5 मीटर के अंदर, ताकि उस प्रेशर को भी मेंटेन कर सके और उसको भी अंदर रख सके। और अगर उसके बावजूद भी रेडिएशन या प्रेशर, पानी का प्रेशर अंदर से बढ़ता चला जाए तो इसमें हम कंट्रोल लीकेज भी कर लेते हैं। तो ये जो पानी इसमें आ रहा है इसमें चांसेस होते हैं कुछ रेडिएशन कैरी करने के जो स्ट्रीम के तौर पर? नहीं, बहुत कम और भी कम, क्योंकि ये सब ये क्लोज सर्कल है और ये कहीं बाहर नहीं निकलता। और ये कंटेन्ड है, फॉर एग्जांपल इसको भी आपने लेड से शील्डिंग के लिए ताकि इसकी रेडिएशन पानी में ना जाए। नहीं, पानी में तो ऐसे इसलिए नहीं जाएगी ना क्योंकि इसको सिर्फ यहाँ से थोड़ी रेडिएशन पानी में जाएगी ना, रेडियो आइसोटोप नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा उस रेडिएशन के पानी में जाने से इसमें अगर कोई सोडियम या इम्प्योरिटीज होंगी ना तो वो मुतासिर हो जाएगा, लेकिन इनको खास ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर ये रप्चर हो जाए, ये पाइप में से फट जाए, टूट जाए, तो फिर ये सारा का सारा जो है ना ये पानी इसमें चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, तो वो दैट इज एन एक्सेस, वो एक अलग कहानी है। चलें आगे चलिए। अच्छा, ये मैंने सिर्फ ये बताने के लिए बताया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में और हमें सिर्फ टाइम का फर्क है। दोनों में जो हिरोशिमा का बम था 13 किलोवाट का, उसमें जितनी एनर्जी जनरेट हुई थी वो 24 घंटे में एक 300 मेगावाट के प्लांट जनरेट करता है। लेकिन हम उस हीट को, गड़बड़ क्यों नहीं होती, क्योंकि हम उस हीट को रिमूव करते रहते हैं। ठीक है ना। तो असल बात ये नहीं है कि आपने हीट जनरेट, असल बात ये कि आपने कितने थोड़े टाइम में जनरेट। और ये जो है ये 1 सेकंड के भी 10-9 सेकंड में, नहीं माइक्रो सेकंड में जनरेट करता है, तो वो इतनी जल्दी रिमूव नहीं हो सकती है। देयरफॉर द टेंपरेचर इंक्रीज। चल सर जस्ट अ क्वेश्चन, ये जब न्यूक्लियर लीकेज होता है सर, ये कितनी देर में, मतलब कितने टाइम फ्रेम में जो एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट करता है सर? द बिगेस्ट क्वेश्चन। कंटेमिनेट से क्या मतलब? हाँ सर, एनवायरनमेंट में कितना जल्दी ये फैल जाए? हाँ, क्वेश्चन इसमें यह है कि जब ये बाहर निकल रहा है एफर्ट्स करेंगे। अब जैसे चलें, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ प्राची न्यूक्लियर पावर प्लांट। फर्स्ट करेंगे एक्सीडेंट की वजह से कुछ रेडिएशन, जैसे मैंने कहा हम खुद भी निकाल सकते हैं, एक्सीडेंट हो गया, फट गया इसका मार्केट का कैनोप में तो खैर क्यों है कंटेनमेंट। अब जब बाहर निकल गया ना तो ये कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा? फर्स्ट करें कि यहाँ समंदर है, ये प्लांट है, ये एक्सीडेंट हुआ और हवा उस नहीं चल रही थी, तो सारा का सारा समंदर की तरफ ही ले जाएगा मैक्सिमम। और अगर हवा इधर की चल रही है तो फिर इधर फैलना शुरू करेगा आबादी की तरफ। लेकिन जो ये यहाँ से फैलता चला जाएगा उसकी जो वो है कंसंट्रेशन है वो कम होती है। तो भी आपने देखा ना ईंटों का भट्टा होता है, इसमें से धुआं निकल रहा है, अगर उसके ऊपर देखें तो कितना धुआं है जब काला, लेकिन उससे थोड़े फासले पे देखें थोड़ा थोड़ा है, उससे और आगे नहीं तो आप तो देख ही नहीं सकते वो धुआं, है ना, क्योंकि वो इतना डाइल्यूट हो गया। तो जब वो फैलता है तो डाइल्यूट हो जाए, लेकिन जाहिर है उसके बाद अगर बारिश हो जाए तो जब उसमें जमीन के ऊपर आ जाएगी रेडिएटिव आइसोटोप, है ना, तो वो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसका कितना इम्पैक्ट है, कितना मतलब इसकी वजह से डोज कितनी है, उसकी बेसिस के ऊपर इमरजेंसी प्रोसीजर्स होते हैं। पहली बात ये कि प्लांट के बाहर का कुछ इलाका वैसे ही खाली रखा जाए, कुछ इलाका ऐसा होता है जिसमें मेरे हुक्म से लोग फॉर्म खाली करें, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं एक्सक्लूजन एरिया बॉर्डर। वो मेरे अपने बंदे तनख्वाहदार हैं, वो वहाँ रह रहे हैं, कॉलोनी नहीं, वो वर्कर्स हैं प्लांट के। फिर उसके बाद एक होता है जिससे लो पॉपुलेशन जोन का है, और वो जोन ऐसा होता है कि जब एक्सीडेंट होगा मैं इन लोगों को फौरन मूव करना शुरू करूँ। और फिर एक और जोन होता है, वो उन लोगों का होता है जिनके बारे में ये है कि अगर रोज निकली और वहां तक पहुंच गई तो फिर मैं उन पर बैठू। इस तरह से जोनिंग की होती है प्लांट। और वो जो है इसमें जो रेगुलेटर होता है वो आपको चेक करता है कि वाकई आपने जोनिंग ठीक की है, थ्रू कैलकुलेशन, थ्रू कैलकुलेटिंग रिलीजेस, थ्रू सिमुलेटिंग एक्सीडेंट्स, ठीक है ना। तो ये सारा एक लेड आउट प्रोसीजर, ठीक है। अब नाउ वी कम टू दिस, पहला पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था कैनोप, वो पाकिस्तान जो है ना दुनिया का 15वां मुल्क था इसने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, हमारे पहले से डेवलप कंट्रीज थे उन्होंने लगाया था। नेक्स्ट,
फिर उसके बाद 4 प्लांट टेस्टों में लगे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। असल में टुडे मैं थोड़ा सा फोकस मैंने इस पे किया क्योंकि स्लाइडें आप देखते रहते हैं और कई दफा आपने पढ़ा यार दूसरे ऊपर आना यार तो वो जो है ना ये लोग आप देखते हैं, बट आई ट्राई टू डू बस कि मैं थोड़ा सा इसकी जो पीछे फिजिक्स है ना और जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा आसान होता है। तो 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे छोटे जो कराची में चश्मा में लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं हार्बिंगर और पाक चाइना कोलैबोरेशन। सबसे पहले चाइना ने कहा कि आओ ठीक है, और तो दुनिया में कोई दे नहीं रहा था नेक्स्ट। और ये फिर K2 K3 हैं जो 1100 मेगावाट के हैं, ये एडवांस पावर प्लांट्स हैं, जनरेशन 3 के पावर प्लांट्स हैं, इसके ऊपर 2 कंटेनमेंट्स हैं, जबकि चश्मा के प्लांट पे सिर्फ 1 कंटेनमेंट है। 2 कंटेनमेंट का ये फायदा है कि अगर अंदर की कंटेनमेंट ब्रीच हो जाएगी तो बाहर की कंटेनमेंट रोक लेगी, और जो बाहर की कंटेनमेंट है इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक द इम्पैक्ट ऑफ जेट प्लेन, जैसे वो 9/11 में हुआ था कि उसने जाके जहाज मार दिया था, तो अगर कोई जहाज उसमें मार भी देगा कमर्शियल एयरलाइन तो ये टूट तो जाएगा लेकिन अंदर वाली कंटेनमेंट को डैमेज नहीं होगी। चलें नेक्स्ट। और ये इनके कैपेसिटी फैक्टर्स हैं, नीली वाली बॉर्डर देख लें कि सारे प्लांट जो है ना बड़ी अच्छी कैपेसिटी ऊपर पावर प्लांट जो है वो चल रहे हैं। आगे ये इनकी कैपेसिटी फैक्टर का कंपैरिजन है विद अदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, हाइड्रो हैं, पब्लिक सेक्टर के थर्मल पावर प्लांट्स हैं। आगे आगे चलें। और फिर ये है एवरेज जनरेशन कॉस्ट। नहीं वापस ये कॉस्ट है बिटवीन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर और दूसरी क्या आप देखें न्यूक्लियर की कॉस्ट कितनी कम है कंपेयर टू अदर्स। ये राइट हैंड पे जो ग्रीन है ना वो न्यूक्लियर है। अगला ये न्यूक्लियर पावर विजन है, आगे जाके क्या होगा और कैसे बने। चलें आगे चलें। अच्छा बस यहाँ हमें तुम्हारे स्लाइडें तो और लेकिन यहाँ हम खत्म करते हैं। अच्छा सुनिए काम करें, इतने आपके अच्छे माशाल्लाह। अभी मैं जरा मसरूफ हूँ ये महीना, जून के एंड में कहीं अगर आप चाहें तो आई कैन हैव अनदर, है ना। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इस तरह की अगर आप लोगों का है इसमें इंटरेस्ट ऑर्गेनाइज, हाँ तो इस तरह का आप ऑर्गेनाइज कर लें। अभी मुझे असल में बहुत दूसरे सेमिनार में जाना है, बैठा है जिसमें मतलब आप दूसरा एंड जरा फिक्स ना हो, so we can go through these things and we can also there are a lot of other things। अगर है तो one out question you can ask। हाँ पूछ भी सकते हैं। अच्छा अब इतनी जो हमने बात की है, अब इसमें थोड़ा सा हम सिर्फ क्विकली ये करना चाहेंगे कि आप जब मैं आपसे कहूँ ये हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपने पढ़े कितने 17 है, और ये वहाँ पे मैंने सारे 17 के 17 लिखे हैं। तो मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज की आप लोगों के लिए कि देखें जी जैसे नो पॉवर्टी है, अभी तक जो हमने न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, यू थिंक इट विल अफेक्ट पॉवर्टी, यस और नो है? By giving the employment opportunities to the हाँ तो इसमें हमने जिसपे करेगा ना उसका व्हाइट है एरो, ऊपर देखें राइट हैंड लेफ्ट हैंड टॉप पे, जिसको थोड़ा थोड़ा करेगा उसका ब्लैक एरो है, और जिसपे बिल्कुल नहीं करेगा उसका एक्स है। तो नो पॉवर्टी में क्या लगा, व्हाइट ब्लैक और एक्स। व्हाइट एक क्लिक करें, जीरो अंगर पे क्या लगाएं, व्हाइट ब्लैक और व्हाइट क्योंकि जो काम एग्रीकल्चर में दबाएं क्लिक करेंगे वो डाल दो, और इस पे क्या लगाऊं गुड। चलें कौन दो मैं भी स्टूडेंट नहीं अच्छा चलें। तो क्वालिटी एजुकेशन पे क्या लगाएं, असल में हमने किया नहीं है लेकिन मतलब एक जाहिर है कि देखिए सारे काम हो नहीं सकते जब क्या कुछ बच्चों को पढ़ाए नहीं, ट्रेन ना करें, तो देयर लॉट ऑफ एम्फेसिस। तो चलें काला लगा दें, शायद देखें क्या है, काला है। बहुत ज्यादा नहीं हम पंगे मार रहे हैं ना, छलांगे मार रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को अपने लोगों को पढ़ा लें। और जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ वो भी एजुकेशन का एक है। जेंडर इक्वालिटी है, दिखाएं क्या है, वेरी गुड। क्लीन वाटर लगाएं क्योंकि हम कोई सैनिटेशन नहीं कर रहे, सॉरी सैनिटेशन नहीं कर रहे, ठीक है ना, वी आर नॉट मेकिंग एनी वाटर, देयरफॉर देयर इज अ रेड के। आगे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, वाइट, यस चलें दिखाएं। नेक्स्ट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ,
देखें क्या है, यस, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, देखें क्या है। चलो, मतलब क्योंकि हमको इतने बड़े छक्के चौके नहीं मारे, इंडस्ट्री की किस्मत नहीं बदलने वाले, कहीं जाके नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कर ली तो एक ब्लैक काफी, रिड्यूस्ड इक्वालिटीज, ये क्या हुआ दिखाएं। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते मुल्क में, लोकेलिटी वैसे ही बल्कि बढ़ती जा रही है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज दिखाएं। अगला क्या है, अगला क्या है, चलो ये दिखाएं। नथिंग मच वी कैन डू। क्लाइमेट एक्शन, राइट, दिखाएं क्या है, क्योंकि वी आर मेकिंग ओनली स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू, हम सिर्फ 8%, 10% बिजली बना रहे हैं, बट स्टिल मेकिंग अ डिफरेंस। इसको हम वाइड भी कर सकते हैं। लाइफ बिलो वाटर, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट, लाइफ ऑन लैंड, नथिंग। पीस, जस्टिस, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जस्टिस में तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बताएं कुछ कर रहे हैं इसको हमें पीस में इज्जत कर, पीस में बस समझो पीस। चलें, मेरे ख्याल में इसको हम माइंडा से, हाँ नहीं सॉरी, ठीक है ना, फ्लैग तो किया भाई हमने, यस, क्योंकि आपकी जो डेटरेंस है इज कंट्रीब्यूटिंग टू पीस, वरना आपका इराक जैसा भी हो सकता है। ठीक है, अब पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इसमें देखें, इसमें वाइड है, बिकॉज वी आर इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, IAEA है, CERN है, ICTP है, और हम खुले हैं, यूनाइटेड नेशंस है, WHO है, यूनेस्को है, जो भी बात की ऑर्गेनाइजेशन हमारी तो बात पढ़ाती है, तो हम, नॉर्थ कोरिया है, दे डू नॉट इंटरेक्ट विद एनीबॉडी, वो तो बंद करके बैठे हैं, हम तो खुले हैं, जो हमारे साथ बात करना चाहे, कॉपरेशन करना चाहे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। अब आप लोगों से ये है कि अगर आपने आगे भी था, लेकिन फिर अगली दफा आपसे कवर करेंगे हम अपने पास हैं। हाँ नहीं नहीं, वो जब तक वो एक्सप्रेशन नहीं होता, स्लाइडें तो किताबों में भी मौजूद है, बट एक्चुअली इस वक्त मैंने 40 बनाई, बट आई थिंक लाइक इफ आई लाइक स्पेंड मे बी 2 hours बना, आपको चित्रा का कर ले बात, है ना, तो फिर हम थोड़ा सा ये भी कर लेंगे। We have Noreen here. I think I would ask her अगर थोड़ा सा PNR के ऊपर इसके साथ सारा इसी से एसोसिएटेड है, एक हमारा जो पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक बहुत बड़ा रोल है, एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल इन प्रेजेंटिंग अ नेशनल सिक्योरिटी एक्शन प्लान NSAP, उसकी बड़ी recognition है, so if you could say something on that. Thank you so much, sir. I just want to make one thing clear, that no business cannot, any business, if you are running an automobile industry, if you are running any industry, you need some strong legislative basis why I am running this business. And if something happens, then what are kind of conditions which can stop me to working this. आप सड़क पे चल रहे हैं, आप एक स्पीड लिमिट आपकी लगाई हुई है, if it exceeds, what will happen? You will be fine. Same case is with the nuclear technology. Nuclear technology for peaceful purposes, EAC has its own role, but regulatory body is there to make sure that no common person or the worker is receiving the radiation beyond a certain limit. सर ने जैसे बात की डॉक्टर अंसर ने कि जब इमरजेंसी प्लान है तो ऑपरेटर इज रनिंग द न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसका अपना एक इमरजेंसी प्लान है। ले पर्सन के लिए यकीन करना मुश्किल है कि क्या वाकई, क्योंकि वो तो एक ऑपरेटर है, ही विल से दैट आई डू हैव इमरजेंसी प्लान, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी चेक करती है ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक कि क्या वाकई ही दैट इमरजेंसी प्लान इज ऑपरेशनल। और अगर जैसे ये इवैक्यूएशन की बात हो रही है, इवन देयर इज सर्टेन टाइमिंग के जिसमें हम चेक करते हैं कि साल में रेगुलर इनकी एक्सरसाइजेस होती हैं इमरजेंसी प्लान की, ऑपरेशनलाइजेशन एस्पेक्ट को चेक करने के लिए कि क्या वाकई इवैक्यूएशन इस टाइम पे हम कर सकते हैं। और इसमें नॉट ओनली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ PAC, हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को भी उसमें ऑन बोर्ड लेते हैं कि हम चेक करने के लिए कि क्या ये बातें जो ऑपरेटर ने हमें किताबों में लिखी हैं क्या वो वाकई ही वर्क करेंगी इन प्रैक्टिकल सिचुएशन।
सो एक इमरजेंसी का पार्ट है। और दूसरा, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने से पहले इट्स नॉट अ डिसीजन ऑफ वन डे, और इवन अगर आप लगाने जा रहे हैं तो देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स व्हिच ऑपरेटर हैज टू मीट, और उसको अपना पूरा एक पेपर वर्क कंप्लीट करना होता है, और रेगुलेटरी बॉडी हैज टू गिव द ऑथराइजेशन। हर स्टेप की अपनी एक स्टेजेस हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में स्टेजेस हैं, और हर स्टेज का अपना एक रिक्वायरमेंट है कि किस स्टेज पे आपने परमिट देना है, किस स्टेज पे अगर आपने फ्यूल करना है, लोड करना है, तो उसका भी आपने पहले परमिट लेना है कि मैं आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आई एम गोइंग टू लोड द फ्यूल, कैन आई डू, देन रेगुलेटरी बॉडी इशू फ्यूल परमिट, देन कंस्ट्रक्शन लाइसेंस है, ऑपरेशनल लाइसेंस है। फिर हर पावर प्लांट की अपनी एक लाइफ साइकिल होता है, इनिशियल 10 ईयर्स का होता है या 20 ईयर्स का होता है, उसमें हर 10 ईयर्स के बाद ये नारे जो है वो उसका रिन्यू करता है, लाइसेंस करता है। ये भी मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट की हद तक बात कर रही हूँ। जो बाकी जितने भी रेडिएशन सोर्सेज जो प्राइवेट इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यूज हो रहे हैं, उसकी भी अपना एक ऑथराइजेशन का प्रोसेस है। आप पाकिस्तान में कोई चीज अगर सोर्स अगर आप बाहर से मंगवा रहे हैं तो देयर आर सर्टेन प्रोसीजर व्हिच यू हैव टू फुलफिल, रेगुलेटरी बॉडी गिव यू द एनओसी, द परमिट, देन यू कैन इम्पोर्ट। तो समटाइम्स स्पेशली जब ये फुकुशिमा के बाद हुआ था कि जी आपकी कारें आ रही हैं, आपकी इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो nobody can import or export anything without the permission of the PNRA and Ministry of Commerce. They give you the radiation free permit, they give you the radiation free जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो जरूरी होता है आने और लाने और ले जाने। एक बात होगी कि आपकी ऑथराइजेशन का ये सारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की होल लाइफ है, अभी सर ने उसकी बात नहीं की, जो हम डीकमिशनिंग स्टेज पे जा रहे हैं सर, जो कैनअप है जो ओल्ड वन है वो अब डीकमिशनिंग स्टेज में इंटर हो चुका है। डीकमिशनिंग ये नहीं है, न्यूक्लियर पावर प्लांट अपना एक ऑपरेशन लाइफ उसने कंप्लीट कर दी, इसका ये मतलब नहीं कि उसको मैंने अबंडन कर दिया, आई फिनिश दिस प्लेट, इट्स एम्प्टी, इट इज ऑफ नो यूज। इसका ये मतलब नहीं है कि आई विल लेफ्ट इट अलोन ओवर हियर। सर्टेन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कम्स आफ्टर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर उसके बाद हमने इसकी डिसमेंटलिंग कैसे करनी है, इसके अंदर अगर ये प्रेशर वेसल है, इसके अंदर अगर ये ऑक्सिलरी कोई सिस्टम है, तो हर चीज का अपना एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि इसको हमने कैसे यूज करना है, इसको कैसे डिसमेंटल करना है, और कितने अरसे तक वी कैन कंसिडर दिस एज अ नो एक्सेस जोन, और कितने अरसे के बाद हम उसको वेजिटेशन या उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। हर जो भी इक्विपमेंट होगा, हर जो भी उसमें चीजें यूज होंगी, उसकी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। So the point is that regulatory control is very essential to run the smooth business of the nuclear technology. Either in the government sector or the private sector, PNRA is striving. Okay. Or the most important thing is that if the nuclear power program started during the 70s, 80s, the whole independent nuclear regulatory body as a separate organization came into being in 2001. But the regulatory infrastructure was there till starting from 70s and 80s. PNSRP. Within the organization of PEC, there was a separate unit who was regulating or keeping check on the conduct or the operation of nuclear power plant. So sometimes we used to hear this kind of comment that PNRA तो 2001 में बना है, इससे पहले क्या कोई regulation नहीं था, तो ये ऐसी बात नहीं। एक क्वेश्चन है मेरा, मुझे बताइए, आपने बड़ा अच्छा ये बात की है कि जी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, तो इंडिया में थोड़ा सा इसके ऊपर उन्होंने मूव फॉरवर्ड किया है कि प्राइवेट सेक्टर भी न्यूक्लियर में आ सकते, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ सिचुएशन प्लानिंग में या हो सकती है? एज अ स्टेट पॉलिसी आई कैन नॉट कमेंट प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वेस्ट में हम देखते हैं कि वहाँ पे है। Far there is nothing, but in terms of use of radiation sources, there is private sector. There are a lot of private sector industries which use radiation sources. For instance, food packaging, the food export, radiation. Similarly, agriculture and the prospecting companies look for gas and oil reserves, or those who lay down the pipelines. So they use radiation sources. So in the terms of use of radiation sources, licensing and their monitoring, the PNRA acts with the private enterprises also. But in terms of generation of power or the nuclear, it continues to be in the public sector, and probably it will continue to the public sector in Pakistan for the
foreseeable future. Whatever development plans we know up to 2040, 2050, they're all about the public sector. There's no plans for private sector. So, do we have any online questions today on basic? The question is by Mr. Imran Sattar. He has not mentioned in this relation. There is no doubt we can be benefited a lot from nuclear technology, but its usage in Pakistan is seemingly low except medical field. What is the reason behind? Are there any financial constraint on nuclear facility, or our expertise are not up to the mark? I don't think so. The use of nuclear technology in Pakistan is low because you just talked about medical. Yes, we have 19 medical centers, but we have power plants. We have 4 power plants already functioning at Chashma, which are producing almost 1400 megawatt of electricity. The 5th one is under construction. We have 2 plants functioning at Karachi, which are producing 2,200 megawatts, which is a substantial amount. And once the plant, 5th plant in Chashma also comes online, that is also 1100 megawatt. So that will also be a big boost to the contribution of the nuclear energy. Usually the percentage of nuclear energy in the energy mix of Pakistan is around 10%. 10 to 12%. 10 to 12%, but it keeps fluctuating because in winters particularly, once the water levels go down in the hydro dams, the power generation capacity of hydroelectric dams goes down, and the contribution of hydroelectricity for a few months of the year, it goes down, and therefore the percentage of the nuclear energy goes up because they continue to produce at the same rate, whereas the output from the hydroelectric plant goes down. And we have seen a couple of months ago, there was a figure that at one time, I think just 2-3 months ago, the proportion of the contribution of nuclear energy in Pakistan's energy mix had gone up to 35% or more for that period of time because the others went down. And the future development plans which we have for building more nuclear power plants, that will raise the contribution of nuclear energy further. And the important aspect, which one of the slides which was also shown by Dr. Ansar Parvez, was the capacity factor at which the nuclear plants work. We have thermal plants which run on coal or oil. They're very inefficient, particularly in Pakistan. They usually run between 30 to 50% capacity. At best 60%, not more than that. But if you see the capacity factor of nuclear power plants, it is above 80%, usually 85 to 90%, which means that whatever you have installed there, it is giving you much better output. Whereas the thermal power plants, where input is more, but the output is relatively low. The productivity level is low because of the inefficiency, and that means that costs you more at the end of the day. Particularly in the case of independent power plants, because you pay them on the capacity, their plant capacity, but not the actual production. And since the actual production is low, so that costs you more and unnecessarily for even what they are not producing. So the second thing I said besides medical is power plant, which is power production, which is very important. And then third is agriculture. There's a lot of contribution, very useful contribution in agriculture. Sir, yes. Sir, I just wanted to add to this particular point about Pakistan's use of nuclear technology in agriculture, biotechnology. So there are four different institutes that PAC has already established. And those 4 institutes, they have produced over 100 different crop varieties. And those crop varieties, eventually they contributed to 6 billion rupees
over a period of 6 billion rupees or $6 billion. Rupees. $6 billion over a period of different years. They have contributed $6 billion to Pakistan's economy. And if I just pick on one of those crop varieties, that is Nayab 78, which is a cotton variety. So that cotton variety, it was introduced in 78, but it was we started cultivating it in 1983. So from 1983 onwards till early 2000s, it again contributed to about 90 billion rupees to the Pakistani economy in terms of the cotton exports. And actually, this particular crop variety, it produced or it brought about a white revolution in context of cotton production in Pakistan. So this is like just one such example. Dr. Ansar also talked about medical field and all that. He did mention that about 1 million patients are treated in these 19 medical centers. But the other thing is that more than 80% of the people visiting these medical centers are treated without cost. So this is, a kind of a welfare program run by Pakistan Atomic Energy Commission for the people of Pakistan. So there's immense contribution of nuclear technology towards Pakistan's economy. Of course, there is a lot that needs more to be done. I think in terms of challenges and issues, perhaps governance challenges. Yes, I was coming to this point because somebody may ask that if we have developed these cotton varieties which give more yield and which are pest resistant, why is it that now we are importing cotton to sustain our textile industry? The reason is that it's not because of the crop variety which we have produced, but because we have reduced the area where we sow cotton. Instead of that, we have expanded the sugarcane crop and established the sugar mills. And because of that, there has been a shrinkage in the area on which cotton was being planted earlier. And that is why the overall output of cotton has improved, not because of seed, but it should have actually improved. And overall, in the volume terms, it has increased in the past 2 years because of this factor that of the policies, administrative policies that we have not checked, although there were regulations that you should avoid expanding the sugarcane crop into the cotton areas, but we were not able to regulate it because of vested interests involved in that. And the result is not only the reduction in the cotton output, but also the problem of water, because sugarcane crop is much more water consuming as compared to cotton. So all these are policy issues and administrative issues, but not the technical issue where the contribution was made by the Nuclear Technology and the Atomic Energy Commission, but we have not failed to optimize the results of those contributions. Any other question? Another area which I want to highlight is that international cooperation. I mean, our peaceful nuclear program is not isolated. We are quite live in the world, and either PNRA or the PAC are actively participating at international forum being organized by the International Atomic Energy Agency. And we are having a close collaboration into different projects, even if it is relevant to the agriculture, to the medicine, or to the conduct of the operation of the nuclear power plant. So after having 2 to 3 decade of at the receiving end, now it's a moment of pride for us that our scientists and engineers are contributing back at the international level. We are hosting a number of countries, their representatives. They visit Pakistan to see the major achievements which Pakistan has made, and they have requested assistance under the umbrella of IAEA to assist them for preparation of necessary infrastructure related to medicine and agriculture.
So this close collaboration and the cooperation with the international community is another kind of proof for Pakistan to act as a responsible nuclear state. So we should also acknowledge this international aspect and the international cooperation and the role which nuclear technology is playing at the global level. Okay, one last question. We can have 5 more minutes, that's all. Then we can close. न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जो प्रोटेक्शन मेजर्स की डॉक्टर से बात कर रहे थे, does it account for, क्योंकि a lot of the nuclear reactors are along the sea coast, जो पिक्चर में खास करके दिखाई दी, तो sea level intrusion से, when you mentioned कि it's protected from an aircraft crashing into it, लेकिन sea level intrusion or immense flooding is the last year में देखी है, so does it have pre-existing safety measures उसके लिहाज से? Okay. Because it was mentioned that it requires fresh water to keep it cool. So either the nuclear, ideally, not always, but ideally they are located either close to a river or a sea. So we have our one complex, Chashma complex is on the bank of Indus River, and the second is the Karachi nuclear power plant complex, which is close to the sea. Now the problem at Fukushima was that one, they were citing that plant. One big flaw that the Japanese had was that they did not have an independent regulatory authority, which resulted in oversight of so many safety and security issues. Because there was no independent oversight authority which could have checked the siting of this plant at that particular location, they went ahead, and it was actually pointed out to them that the level at which it is being built is very low, and there is a record of tsunami waves coming in that area, and this can be affected. But they thought that it is sufficiently high, and no such big tsunami can come. But once it came, it actually was combined with a very powerful earthquake. And because of that earthquake, the normal power supply was disrupted, due to which the cooling system of the power plant went off, and the emergency generators which were there installed, they took over. And the plant was still functioning, but then immediately afterwards, the tsunami came. And tsunami waves, these were exceptionally high. It was a historical tsunami, much more powerful than any which had historically happened in that area. And since the plant was not at a safe height, once the tsunami wave came, it submerged the power generators, emergency generators, which had taken over the role of providing the electricity to the cooling system of the plant. So once the generators also went off, then there was no system, no power supply available for the running of the water pumps which keep the plant cool. As a result of that, the temperature kept building up, and it built up to an extent that the core of the plant started melting, and that caused that accident. But still, the interesting aspect about is that although nuclear energy is considered to be very dangerous, the track record of nuclear energy is very good, because even in this incident, there was no casualty. Although about 1 million people had to be relocated from the homes to other safe places because of the radiation spread. And they have not yet been able to deal with the contaminated water which got accumulated in the plant. They have been announcing that they are going to release that water into the sea. There's been a lot of opposition to that because of its effect on marine life and overall the situation in the sea in that area. But that will be done. But it did. The other major incident, that accident which happened in former Soviet Union. It is in Ukraine. Chernobyl. Now that plant had a very major accident.
The only casualties caused were the rescue workers who are trying to put out the fire and trying to control the situation. Those were the people who were affected and they died there. But because of the radiation in the areas around that plant, there were no casualties. Although the radiation went far and wide because of the winds and others, went up to Scandinavia and reportedly came to through Afghanistan to Pakistan also, and it went all around, but there were no casualties. And now people go there. A lot of people have gone back to their homes in that area. So if you take appropriate measures, if you have a regulatory mechanism which oversees the safety security aspects and maintains the acceptable standards, there are no compromises on that, then it is a safe technology to handle. You talked about decommissioning. Now, decommissioning, it's not unlike, not like any other industry or any other plant that you just dismantle it and throw it away. That's not the case, because those areas still continue to have radiation levels, and they have to be given time to cool off and the radiation levels to go down, which is extended over a long period of time. And sometimes the process is followed what they call is entombment. That instead of dismantling a plant, they pour concrete over it and actually make a kind of a tomb or a grave, a large grave for the plant covered by concrete, so that the radiation does not leak. But that is in case you don't have to reuse that area. But since we have other plants in that area, the same infrastructure, the same administrative setup which is supporting there, so this plant will be decommissioned. It takes a long time and it costs also. It's not cost free. So as I said, it is not like switching electricity switch on and off. Nuclear power plant, if it is to be shut down, there is a procedure. If it is to be brought back online, it takes time. And similarly, if it is to be decommissioned, again, it's a very tedious and lengthy process, and you cannot just abandon it or ignore it. You have to follow the procedures so that it does not cause any hazard to the safety and security of the people who go into that area. So we can have your closing remarks. So I think, as I mentioned in the beginning, it's a very important landmark in Pakistan's history that it was a day when we established our credentials as a nuclear weapon state. Although in terms of civilian using of nuclear technology, we had a long record. As Dr. Ansar Parvez mentioned, Pakistan was one of the earliest countries in the world to have functioning nuclear power plant. The Tanuk was established in the early 70s, and at that time, there were only a dozen odd countries in the world which had running nuclear power plants. So we are one of those countries which were quite advanced in terms of nuclear technology. We had by that time the Nellore research reactor, we had Pinstack, and then we had Tanuk. Although unfortunately, because of the international politics, we were denied access to nuclear power plants by the international community for almost 2 decades after the inauguration of the new power plant. And the second plant which we were able to acquire was the Chashma 1 from China in 1992. So there was a gap of about 2 decades. Had that period not been there, this gap of 20 years, probably our nuclear power production program would have been much more extensive than what we see now. But I think it will build up rapidly, because now the strategy which we adopted is that we are now
standardizing on this 1100 megawatt nuclear power plant, which is one of the most advanced and safest designs available in the world. This is known as the AP1000 type of reactor. So this will rapidly increase. You can just imagine that 4 Chashma power plants have 1300 megawatts capacity, and one plant is 1100. So if we have built 2 in Karachi, one is being built in Chashma, and we bring more 1100 megawatt plants. So 1 or 2 plants will actually equal the capacity of 4 plants which were already running. So within the next decade or so, it all depends on the availability of resources to purchase those plants or to pay for those plants. I think the contribution of nuclear energy in our energy mix and for sustainable development, it will be substantive in the years to come. Thank you.